Today we will learn the hard words, one word and question answer of chapter Clothes We Wear. First one is cotton. C-O-T-T-O-N cotton. C-O-T-T-O-N cotton. W-L-L-E-N woolen. W-L-L-E-N woolen. Silkworm. S-I-L-K silk. W-A-R-M worm. Silkworm. है ना? Fiber. F-I-B-E-R fiber. F-I-B-E-R fiber. Weavers. W-E-A-V-E-R weavers. W-A-V-E-R-S weavers. Loom. L-O-O-M loom. Hair. H-A-I-R hair. H-A-I-R hair. Leather. L-E-A-T-H-E-R leather. Cocoon. C-O-C-O-O-N cocoon. C-O-C-O-O-N cocoon. Thread. T-H-R-E-A-D thread. T-H-R-E-A-D thread. Uniforms. U-N-I-F-O-R-M-S uniforms. Uniforms. U-N-I-F-O-R-M-S. Costumes. C-O-S-T-U-M-E-S costumes. C-O-S-T-U-M-E-S costumes. Purpose. P-U-R-P-O-S-E purpose. P-U-R-P-O-S-E purpose. Summer. S-U-M-M-E-R summer. These are your keywords also. Now answer in one word. Clothes make us look smart and decent. क्लोथ्स, अच्छे क्लोथ्स पहन के हम कैसे दिखते हैं? स्मार्ट और डिसेंट दिखते हैं ना। जैसे कि आपने अभी एक्टिविटी करी थी ऑनलाइन लाइव क्लास में हमारी, तब सब कैसे स्मार्ट दिख रहे थे। किसी ने कॉटन पहने के क्लोथ्स पहने थे, किसी ने यूनिफॉर्म पहनी थी, किसी ने गुजराती कॉस्ट्यूम, सब डिफरेंट कॉस्ट्यूम में थे ना। तो क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट. S-M-A-R-T smart. D-E-C-E-N-T decent. Second, we wear different types of clothes in different seasons. We wear different types of clothes in different seasons. S-E-A-S-O-N-S seasons. Third, most of the fiber we use comes from plant and animals. फाइबर हमको कहाँ से मिलता है पता है ना आपको? प्लांट से मिलता है और एनिमल से. प्लांट से कैसे? कॉटन प्लांट से कॉटन थ्रेड, कॉटन फिर थ्रेड, एंड एनिमल से लेदर्स भी बनते हैं, है ना. ओके, नेक्स्ट फोर्थ, कॉटन कम्स फ्रॉम, अभी बताया, कॉटन प्लांट्स. कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. वीवर्स weave cotton thread into clothes. Weavers weave cotton thread into clothes. Sixth, wool comes from the body hair of sheep. Who gives us wool? ये तो हम KG2 से लर्न कर रहे हैं. Sheep. Who gives us wool? Sheep. So wool comes from the body hair of sheep. Seventh, silk comes from a silkworm's cocoon. Silk comes from a silkworm's cocoon. C-O-C-O-O-N. C-O-C-O-O-N cocoon. Eighth, we wear different kind of clothes for different purposes. We wear different kind of clothes for different purposes. यहाँ पर आप देखिए सेम है, ये वन वर्ड आंसर. यहाँ पर डिफरेंट काइंड है, और जो मैंने अभी पढ़ा सेकेंड वाला, वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन, और यहाँ काइंड है ना. तो अलग अलग प्रकार के कपड़े हम अलग अलग कारणों से पहनते हैं. वी वेयर सिल्क क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, है ना. वी वेयर
silk clothes on special occasions. What is the spelling of occasion? OCCASIONS. 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 Now, question answer. Question 1. First question is, why do we wear clothes? Why do we wear clothes? So answer is, we wear clothes to protect our body from heat, cold, rain, wind, dust and insect bites. है ना? मच्छर काटते हैं ना, हमको कीड़े भी काटते हैं. सो उससे बचाने के लिए भी ना हमको कपड़े पहनने पड़ते हैं ना, अलग अलग टाइप के. Question 1 again. Why do we wear clothes? We wear clothes to protect our body from heat, cold, wind, rain, dust and insects bites. Name the different types of clothes. Types of clothes are cotton clothes, woolen coats, raincoats and silk clothes. Types of clothes are cotton clothes, woolen clothes, raincoats, silk clothes. Special clothes that we wear for special purposes are known as costumes. Special clothes that we wear for special purposes are known as costumes. Question 4. What are uniforms? Special kind of clothes worn by people when they go to work or by children at school are called uniform. है ना? तो स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ जो कि हम स्पेशल काम के लिए या स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहलाती है हमारी यूनिफॉर्म. स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ worn by people when they go to work or by children at school are called uniforms. 5. Name a few things that protect you from the rain. We wear raincoats and gumboots when it rains. Define the following. Uniform. अब इसकी आप छोटी सी definition. Special clothes worn by people to work or by children at school. Special clothes worn by people to work or by children at school. Costume. Special clothes that are worn for special purposes. है ना? Special clothes that are worn for special purposes. Cotton clothes. Cotton clothes are very light. They absorb sweat. पसीना आता है तो absorb करते and keep us cool. अच्छा लगता है. We wear them during summers. We wear them during summers. Woolen clothes. Woolen clothes keep us warm and protect us from cold. We wear them in winters. Silk clothes. Silk clothes are shiny and are smooth to touch. Smooth लगते हैं ना, soft soft. We wear them on special occasions. We wear them on special occasions. Silk clothes are shiny and are smooth to touch. है ना? शाइन करते हैं और टच करने पर स्मूथ फील होते हैं. We wear them on special occasions. कब पहनते हैं हम? Special occasions पर, है ना? तो you have to learn all these things, books, exercise also. Okay? Then only you will be able to solve the worksheet. So you have to learn all those things, all the spellings, है ना? Bye.